मेरा नाम सोनू चौधरी है, ये सत्यवती चौधरी, ये परी चौधरी। इनके ना दिल में छेद बताया था, मैं वहाँ ले गया था बच्चे वाले डॉक्टर पे, तो उन्होंने बोला हार्ट चेक कराओ, इसके हार्ट में दिक्कत है। तो फिर मैंने चेक कराया तो 4 mm का बता रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि थोड़े बहुत दिन दवाई खिलाओ ठीक हो जाएगा। फिर लेकिन दिक्कत अब भी वही आ रही है, तबीयत खराब हो जाती है जल्दी जल्दी, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है और एकदम सांस जल्दी जल्दी लेती है, यही दिक्कत आती है। 3 साल की कृपा है महाराज जी की, जितने जो भी गरीब लोग हैं सबके लिए बढ़िया व्यवस्था है, सबका इलाज फ्री होगा और अच्छा हो रहा है। कृपालु महाराज ने बहुत अच्छा किया ये तो, कि फ्री का सब कैंप वगैरह और दवाई वगैरह सब अच्छी मिल रही है। क्या तकलीफ होती है इसको? हंसी चढ़ती है? बैठो। हाउ आर यू? आप इधर आ जाओ। हाथ में क्या हुआ? क्यों? पसली के लिए? चलिए बचपन से? हाँ बचपन से बोला था। पहले जब दूध पिलाते थे तो थक जाता था, एक बार में पी लेता था? हाँ पी लेता था। पसीना तो नहीं आता? नहीं। इसके हार्ट में छेद है, हाँ। है ना? तो हमें इको करके मैं चेक करता हूँ। इससे क्या होता है ना, अच्छा खून और बुरा खून मिलता है एक साथ, और लंग में बहुत ज़्यादा खून जा रहा है। तो हम इसका इको करेंगे, इको करके ये बताएंगे कि क्या करना है। बहुत से छेद ऐसे होते हैं जो कि उम्र बढ़ती है 8 साल तक तो छोटे हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे VHD होते हैं छेद जो बंद नहीं होते हैं, तो हमें देखना है कौन सा वाला है। और कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि उसके बीच में फेफड़ा खराब होने लगता है, तो हमें पहले सर्जरी करना पड़ता है। कुछ छेद ऐसे होते हैं जैसे उसमें बिना सर्जरी के हम एक बटन डाल के बंद कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के। तो पिछले कैंप में हम आए थे तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका किया वो ठीक है, तो इसलिए अभी इनको रोक लो। अभी हम इनका एको करेंगे और फिर बताएंगे क्या करना है। Good thing. So, कितना लिखा हुआ वहाँ पे? 44 बेटा पैर मोड़ो, आ जाओ। एक मिनट। मम्मी 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 नहीं नहीं मम्मी परी। आप इधर आ जाओ। आगे परी नहीं 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 बेटी नहीं मैं तेरे पास ना नहीं रोना नहीं। ऐसे मोड़ लो पैर। ठीक है। He's got hepatomegaly. He or she? हाँ परी सी She, no? इसका थोड़ा लीवर भी जो है ना वो बड़ा है थोड़ा। That means left to right shunt is quite bit, you know. She's in heart failure. अभी सांस फूलती है इसकी? हाँ हाँ कभी कभी हो जाती है। पैर में सूजन तो नहीं आती? नहीं पैर में सूजन तो नहीं आती, दर्द बताती है। दर्द पेट तो नहीं फूलता ना? नहीं। ठीक है, मैं इसको दवा दूंगा। थोड़ा सा ऐसी दवा है जो मतलब एक गोली है या वो है इंजेक्शन है, उसको पीना है सो दैट ये हार्ट पे जोर कम पड़े। ठीक है, उससे पेशाब ज़्यादा होगी।
Okay, so she is a 3-year-old girl, and what she has is a hole in the heart, which we call a ventricular septal defect. Now, what happens is that the blood from the left side of the heart, it shunts into the right side of the heart. That means there is a mixing of good blood with bad blood, and it leads to a short circuiting of blood circulation and a lot of load on the right ventricle, and there is a heart failure, and also a lot of load in the lungs. So that is why she is getting recurrent lung infections. Now this has to be corrected. Either the hole has to be closed, either by surgery or without surgery by a device. Sometimes these holes naturally become, as the patient grows in age, by age of 7-8 years, they become smaller, and we just follow it up till that age with an echocardiography. If it is sort of closing on its own, we give it time. Otherwise, we close it by surgery or without surgery by putting in a button-like device. So I'm going to do her echo after we sedate her. This is the right age to actually diagnose and treat or follow up. Hopefully she should be fine. If we don't treat in the right time, the risk is then they go into a permanent chronic heart failure, and then nothing can be done. Even if you do surgery, if the lungs get destroyed or they have a hypertension, then even surgery doesn't help. This? Yes.
कितना छोटा था Exactly, see, I'm so 100. Yeah, 90. The organ pressure is not high. That is what is there. So this is a restrictive VSD. A large VSD is not going to produce a lot of sound like this. Now we have to calculate the shunt. This is, septal aneurysm or a tricuspid valve collapse. ज़्यादा होगा. This time settle. See, the VSD is actually this much. Now can you put? The VSD is from here. This is about 3 millimeters. So this is the septal aneurysm which is closing it. So I think he would require surgery at some stage. ठीक है, शंट निकाल लो फिर. इनका दिल में छेद है बच्चे के. नेचर उसको बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे छोटा कर रहा है. लेकिन अगर बंद हो जाता है कुछ महीने में तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा. ठीक है. और जो इसके बीच में पसली चलती है उसको देखते रहना. हो सकता है अगर वो बंद होने लगेगा तो धीरे धीरे वो चीज़ें कम हो जाएंगी. और अगर बढ़े कभी तो बताना. पसली ज़्यादा चले तो एंटीबायोटिक ज़रूर देनी है. ठीक है. लेकिन इसको कुछ महीने देखेंगे. अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो फिर इसका ऑपरेशन करेंगे. अभी कितना वेट है? वजन कितना है? 12 किलो. ठीक है. तो 10 किलो के ऊपर के बच्चे का ऑपरेशन में ज़्यादा रिस्क नहीं होता. Yeah, some medication and then ultimately a follow-up. Maybe the nature closes it. If it doesn't, then we have to close it surgically. This cannot be. The other way to close VSD is without surgery. We put a button sort of device, but here it's not suitable. But the nature is taking care and it's sort of sealing the hole. So it's been a wonderful experience again. We had about 330 patients and we had a team of 4 assistant professors in cardiology, myself and 2 of my junior consultant colleagues and about 3 technicians apart from doctors from JKC, Vrindavan. So the experience was wonderful. I mean, the team here worked very hard and they sort of screened about 330 patients out of maybe 10,000-15,000 patients which they saw over a period of last 20 days. And the type of patients which we saw were, from it's like a garden variety. We had everything. We had weak hearts which were very weak. We had patients of heart attack. We had patients of angioplasty with congenital heart disease, holes in the heart. And then we also had patients where there was a shunting and there was a mixing of good and bad blood. We had patients with vascular disease involving the carotid arteries, brain circulation, the lower limbs, and patients with impending gangrene, varicose veins, so heart failures, and complete heart block requiring pacemakers. So we had almost every variety of cardiac patient which we see in our day-to-day practice.
the thing about it that these patients they had treatment, and in terms of medical therapy, investigation, so we were doing echoes for all these patients. I think we have done more than 250 echoes, and we also did treadmill test, ECGs, X-rays, blood test. So it's everything which is required for the workup of the patients in good tertiary hospitals was made available here, and it was done with the spirit of service, and the patients were really satisfied. So yesterday we finished our camp starting in the morning at about 12 in the night, and today also I think we'll be probably finishing very late in the night. People who really can't afford, we'll arrange free treatments in terms of angioplasty, bypass surgery, valve replacements, pacemakers, or device therapy for congenital heart disease, all free of cost, and we'll arrange this and treat these patients over a period of coming few months. So it's a very wonderful, divine and satisfying experience, and the good thing is that we are all doing it for Maharaj's happiness, and it's a seva to God and Guru. Especially in Vrindavan, these services are not available, and these sort of patients, even if they are in metros like Delhi and all, if they don't have money, these sort of services are not available freely for them. So if all these patients can get the best of the treatments here, I think this is one of the biggest thing which we can do, and this is what JKC has always strived for. So there are two things. Maharaj-ji always sort of gave us doctors an impression that we have got a special privilege to serve the needy, and these patients are very, we call it like deen, and they are desperate and helpless. In a way, they are very near to God and Maharaj-ji, because they only have one faith and one hope, last hope, that this is where they come and this is where they'll get the final treatment. Our motivation is, Maharaj-ji, at least for me, always told me that you try to serve, or you serve God in the patient, and think that I'm with you watching all this. So that's my inspiration, and every time I sort of do this, I feel His presence, I feel the presence of God in the patient, and it's an experience which you experience, and it keeps motivating you to do more and more. So it gives you an immense satisfaction and peace and happiness to do this, much more than what we do in corporate medicine at our own places. Yeah, it's phenomenal, that Didis are doing exactly what was happening in Maharaj's time, with the same devotion, with the same spirit to please and Maharaj-ji by their continuing the services and the ambitions of Maharaj-ji. And it's very satisfying to see how this whole the JKP and JKC organization is growing and expanding day by day, and it's we are very thankful to them that and very inspired by them, the way they have actually carried the mission forward, and exactly the same way, and also expanding it to greater and greater heights. मैं चाचा इनका बहुत अच्छा, मेरा भी ऑपरेशन हुआ है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, और महाराज जी की, जगत गुरु कृपालु जी की तो बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पे, जो गरीब लोगों की इतनी सहायता करते हैं हर चीज़ से, दवाई से ही नहीं, गरीब महिलाओं के लिए भी कंबल वगैरह, ये सारी चीज़ें बांटना। तो ऐसे परम श्री श्री 108 श्री श्री जगत गुरु कृपाली जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार दंडवत करता हूँ। इसके जो दिल की जो प्रॉब्लम है, 4 mm का इसके छेद आया था, तो डॉक्टरों ने बताया कि अपने आप मर जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है और इसका अच्छा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और आप लोगों की कृपा होगी और महाराज जी की कृपा होगी तो अच्छी तरह से इसका इलाज होगा, तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची है और ये सही हो जाएगी तो बड़ी खुशी होगी हमें, और ये आप लोगों की कृपा से ही हो सकता है बस, और राधा रानी जो करेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे कि मेरा भी ऑपरेशन हुआ और इस बच्ची का भी ऑपरेशन होकर के ये ठीक हो जाए, बस यही राधा रानी से दुआ करते हैं। कृपालु महाराज की कृपा है, राधे, उनकी बदौलत जो है जनता का भला हो रहा है और उनको दवाई दारू मिल रही है, नहीं गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं है। जय श्री राधे।
महाराज जी बहुत बढ़िया आदमी थे, जितनी ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं, इतना धर्म कमाया उन्होंने, इससे ज़्यादा क्या है। महाराज जी का नंबर 1 नाम हो गया हमारे ब्रज के अंदर। इनकी बहुत तगड़ी सेवा रही है। शिव मंदिर में देखो, इसमें हॉस्पिटल में कितनी सेवा चल रही है उनकी बार बार। सबसे बड़ा देखो धर्मार्थ सेवा चली है उनकी। फिर उनके लिए बार बार धन्यवाद है। ऐसे भगवान तो बार बार जन्म लेके आए यहाँ तो उद्धार हो। ब्रजवासियों की सबसे ज़्यादा सेवा उनकी रही। बार बार धन्यवाद है महाराज जी के लिए। ऑपरेशन हुआ है इनके, जो है पहले से जन्म का छेद था दिल में, तो मैंने दिखाया था रामकृष्ण मिशन में। रामकृष्ण मिशन से फिर हम जानकारी करके यहाँ प्रेम मंदिर में आए थे। नागरा सुपरनाव दिखाया था, किसी के द्वारा जानकारी करके यहाँ लगा था। उसके बाद में फिर हम बोलो दिखाने गए थे, सर ने कानपुर में ऑपरेशन किया था 2018 में। फिर इनकी जांच हो रही है, काम ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ और बहुत अच्छे डॉक्टर रहेंगे। और दीदी सुपरनाई बहुत अच्छी, मतलब सभी स्टाफ बहुत बढ़िया है। हमको कोई मतलब दुख नहीं हुआ इस बात का। बढ़िया ऑपरेशन हो गया। हमारी लड़की बहुत बढ़िया ठीक भी है, हमको कोई दिक्कत इस बात की नहीं है। हमको बहुत खुशी है, बहुत बहुत बधाइयाँ उनको देते हैं जिन्होंने हमारी बेटी के लिए इतना किया है। मैं उसका आभारी हैं और जीवन भर आभारी रहेंगे। मैं बड़ी होकर डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। श्रीमद जगद्गुरुत्तम पूज्य महाराजा श्री कृपालू जी महाराज के द्वारा ये वृंदावन में स्थापित चिकित्सालय है। ये ब्रजवासी ही नहीं, पूर्ण मानवता के ताई एक उपहार है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि महाराज जी के सामने यह चिकित्सालय की जब नींव धरी गई तो महाराज जी ने कृपा करके एक ईंट मेरे हाथ में धरवाई। तो यानी तो मेरे तो हृदय से जुड़ाव है। और ये जो रूप है या यहाँ के जो प्रकल्प हैं प्रेम मंदिर परिषद के और परिकर के द्वारा, ये महाराज जी को विराट स्वरूप है। महाराज जी कहीं गए ना आए, आज भी अपने प्रकल्पन के द्वारा वो जन जन के बीच में स्थापित हैं। और जैसे अभी हर साल तीनों दीदी यह कहें कि हमारी जय मत बोलवाओ, तो हम तो यूँ कहें ये त्रिवेणी को संगम है। प्रायः ये देखा गया है कि जो महापुरुष हैं उनके जायवे के बाद उनके प्रकल्प रुक जाएं अथवा वह जगह की शोभा कुछ कम है जाए। लेकिन चूंकि महाराज जी अंतर ध्यान भई हैं, सामने ते ना दिख रहे लेकिन शरीर ते नाए, वो अभी भी सबन के बीच में हैं। यानी ये तीनों दीदीन के द्वारा महाराज जी के द्वारा जो स्थापित सिद्धांत हैं, महाराज जी के द्वारा स्थापित और प्रारंभ किए भाई जो सेवा प्रकल्प हैं, वो तीनों दीदीन के द्वारा जो चल रहे हैं, ये बहुत बहुत विलक्षण बात है। नहीं तो मैं तो ब्रजवासी हूँ, यहाँ को जन्मजात हूँ। कई महापुरुषों के स्थान को देखो कि वो गए तो शोभा गई। लेकिन यहाँ पे ये कृपालु चिकित्सालय के द्वारा रात में तारीख बदली ना है कि लोगों की लाइन लग जाए। सुबह अभी मोते भैया कह रहे कि मैं तो सुबह 4 बजे को आए हुए हूँ। या को मतलब यहाँ चिकित्सालय और भी हैं, लेकिन और जगह ते जो कार्य न है पावे, रोगन को शमन नहीं है पावे, यहाँ पे हो आपको अभिप्राय एक ही है कि यहाँ ये जो जितने भी चिकित्सक या जितने भी भैया बहन हैं, उनके अंदर स्वयं राधा रानी और भगवान कृष्ण बैठ के ही कार्य करवा रहे हैं। यानी और जगह जो ठीक नहीं है रहो वो यहाँ ठीक है रहे हो। या मैं निश्चित रूप से भगवत कृपा च सर्वधर्मेभ्यो बलिष्ठा, महाप्रभु जी ने, बल्लभाचार्य जी ने एक बात कही, तो वो ये समझ लियो कि यहाँ राधा रानी की और भगवान कृष्ण की ही कृपा नृत्य कर रही है। और अम्मा जी और श्री महाराज जी कहीं गए भे ना आए, वो अभी भी हम सब लोगों के बीच में है। First of all, I will pay my regard to Maharaj ji and the administration of this hospital, our teacher Dr. Anand Khanna sir, that they give us the wonderful opportunity to serve the people
and we learned a lot of new things. And I feel really lucky to serve them, because for rich people there are so many big hospitals and they are ready to pay anything, but for serving underprivileged and very poor people, this is such a good platform, and I would love to come here even in future. Actually, it was nice, great experience and heart satisfying actually. Every investigation we did pertaining to the cardiac disease, and the patients were so good, so polite, so humble, and they came particularly with this cardiac camp. So we did all sort of investigation like TMT, echocardiogram, ECG, and we wrote respective medication for the disease. And we are so happy to attend, and in future if you people will invite, then we'll come definitely. Pari. Pari.